So have you looked at some examples of partial order relations on some different sets than what we discussed in the class last time? किसी ने देखे एक दो एग्जांपल्स कोई डिफरेंट सा? किसी ने कोई एग्जांपल देखा जो थोड़ा डिफरेंट है देन व्हाट वी डिड इन द क्लास? Not different. Yes, sir. यस बताओ. So let V be a vector space Yes, V a vector space over field F. for some field F. Yes. Let S be any subset of set of subspaces of V. S subset of Set of subspaces of V. set of subspaces of V. Define relation R on F. Let's define relation R on S as A is related to B, capital A. A is related to B If and only if A is a subset. A is a subspace of B. A is a subspace of B for each A, comma B belongs to F. for each AB belonging to S. So can someone prove why this R is a partial order relation? So why it is reflexive? Any vector space is a subspace of itself. For each A belonging to S, A is a subspace of A, right? So that is A is related to A, so it is reflexive. What about antisymmetric? Let A, comma B belongs to S be such that A is related to B and B is related to A. Yes. That A is related to B and B is related to A. Then Since A is a subspace of B, A is a subset of B. A is a space of B and B is a subspace of A. So this implies A is contained in B and B is contained in A, and this implies A equal to B. So antisymmetric is also there. Then transitivity. So let A, B, C belong to S such that A is related to B and B is related to C. So this implies A is a subspace of B and B is a subspace of C. क्योंकि A सबस्पेस है B का और B सबस्पेस है C का, so A will be a subspace of C. ये प्रॉपर्टी होती है, ठीक है ना, सबस्पेस की. So then A is a subspace of C and this implies A is related to C. So hence R is a partial order relation on S. Okay, so we will see more such examples maybe today or tomorrow. Okay, so we are going to first start with our section, which is unit 1. So we are going to start with partial ordered sets. Okay, everyone. They are also called
posets. So let us write its definition. So what is the definition? And they are also called ordered sets. Okay, there is some order. Or simply ordered sets, because some books use as ordered sets and some books write partial ordered sets. Okay, so but we will call it as partial ordered sets or posets. So definition: a set P together with a binary operation, a non-empty set P together with a binary relation, a non-empty set P together with a binary relation. ठीक है, हम relation को we have already noted in the last class that we will denote it by this symbol. Okay, less than equal to symbol. So this is a binary relation. This is not less than equal to, but because we have seen that partial order relation behaves like less than equal to, so that's why we are using this notation. Okay, with a binary relation less than equal to is set to form is set to form a partial ordered set, a partial ordered set if this is a partial order relation on P, that is, first A is related to A for each A belonging to P. Second, so this one is reflexivity. Okay, this property is our reflexivity. Then if A is related to B and B is related to A, then A equal to B. So this property is anti-symmetric property. ठीक है, and third, if A is related to B and B is related to C, then A is related to C. This property is called transitivity. ठीक है, so a set, अभी तक हम partial order, so a set will be called partial ordered set if the relation on it is a partial order relation. Is it fine? So a set together with so in this case so in this case we call P less than equal to be a partial ordered set if there is no ambiguity on the relation less than under consideration. ठीक है, अगर हमें पता ही है कि कौन सा रिलेशन है तो then we can then
we simply say P is a partial ordered set. ठीक है, सो हम इस रिलेशन को भी इग्नोर कर देते हैं अगर हमारे पास हमें पता है कि कौन से रिलेशन जो है जिसकी हम बात कर रहे हैं. ठीक है, so if there is no ambiguity on the relation under consideration then we simply say P is a partial ordered set. बट हमें पता होगा जब भी हम P को पार्शियल किसी भी सेट को पार्शियल ऑर्डर्ड सेट बोल रहे हैं, so it means there is some relation under consideration. Okay, is it fine everyone? So whenever we call a set to be a partial ordered set, that means there is some relation under consideration. बट क्योंकि वो हमें पता है कि भाई इस रिलेशन की बात कर रहे हैं, सो वी आर जस्ट इग्नोरिंग दैट रिलेशन इन राइटिंग. ओके, जैसे G को ग्रुप बोलते हैं हम, अगर किसी भी सेट G को ग्रुप बोलते हैं तो इट मींस कि देयर इज सम रिलेशन, देयर इज सम ऑपरेशन, एडिटिव ऑपरेशन होगा या कोई मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेशन होगा, सो देयर इज सम ऑपरेशन. So similarly we are calling a set to be a partial ordered set, it means there is some relation under consideration. Is it fine? Is it fine? Yes, sir. Okay. So हमने कौन कौन से रिलेशंस सिंपल एग्जांपल्स लिखते हैं जल्दी जल्दी. Examples, so we have seen R with, so here this is usual less than equal to, right? So एक एग्जांपल ये हो गया. देन और कौन से देखें हमने एग्जांपल्स. हमने कंटेनमेंट के साथ देखा हुआ है. ठीक है, containment relation. So this is a poset is a poset, right? बल्कि कोई भी सबसेट ले सकते हैं इसके साथ. हमने तो यहाँ पे ये सेट लिया हुआ है, बट वी कैन टेक एनी सबसेट, राइट? Is it right? Yes, reply करो बेटा, yes or no. Yes, sir. और कौन सा भी, जैसे R comma divide. S with सबस्पेस के लिए कौन से सिंबल होता था? आई थिंक यही होता था ना. दिस वाज द सिंबल फॉर सबस्पेस where S is subset of set of all subspaces of vector space VF, right? And this relation या इसको where A is, if and only if A is subspace of B, या इसको ये डबल ही कर दो.
is a poset. ठीक है, अभी हमने देखा ये, this is a poset. There can be more such examples. We will see. अभी देखेंगे हम, ठीक है. पहले we do some more notations and all those things. So comparable elements. अभी हमने poset define करा. Now we will talk about comparable elements. So what are comparable elements? क्या होनी चाहिए definition बताओ. Comparable elements in a poset. Yes, बताओ. What should be the definition of this? Yes. क्या होनी चाहिए. दो, जैसे अगर नंबर्स ही हैं, दो नंबर को कब कंपेयर, नंबर्स में तो चलो ये सारे कंपेरेबल. कॉम्प्लेक्स नंबर में दो नंबर्स कब कंपेरेबल होंगे, जब उनके बीच में कुछ कंपैरिजन हो, या दो सेट्स कब कंपेरेबल होंगे, या तो ए इज कंटेन्ड इन बी या बी इज कंटेन्ड इन ए, राइट, तभी कंपेरेबल है वो. सो ट्रू एलिमेंट, लेट पी बी ए पोसेट. ठीक है, टू एलिमेंट्स A, B belonging to P are said to be comparable, if either A is related to B or B is related to A. ठीक है, two elements A, B belonging to P are said to be comparable if either A is related to B or B is related to A. ठीक है, जैसे अभी कोई, जैसे सेट है, सेट में कुछ सेट कंटेंट होते हैं, कुछ नहीं होते हैं. सो हर, इन जनरल वी डोंट, नॉट एवरी एलिमेंट आर, नॉट एवरी पेयर ऑफ एलिमेंट इज कंपेरेबल, राइट. सो नोट दैट इन अ पोसेट not every pair of elements are comparable. जैसे अगर हम कलेक्शन वो px कंटेनमेंट के साथ ले लें, तो देयर विल बी सम सेट्स जो कंपेरेबल होंगे, जो देयर में बी सेट्स दैट आर नॉट comparable. Okay, is this definition clear? Comparable elements. Yes, sir. Okay, so now notation, we are going to define a notation. So if A is related to B, ठीक है, इसको ऐसे रीड करते हैं, A is related to B but A is not equal to B, then we write A is strictly less than B. ठीक है, and read it as A is less than B. So ये less than है, ठीक है, this less than is different from our usual less than. ठीक है, so A is related to B but A is not equal to B, then in that case we write A is strictly less than B and we read it as A is less than B. Is it fine? Is it fine, everyone? Yes. So I'm going to give you an example.
So we have already discussed these examples, so we are going to just okay, so this is one such example. So we have already seen that if we have usual less than equal to, then it forms a poset with any set of numbers. ठीक है, उसमें कोई भी natural ले लो या integers ले लो या कोई भी subset of R ले लो, any subset of R, right? So these we have already seen them कि they all form a partially ordered set, right? Set of naturals with usual less than equal to, set of integers with usual less than equal to, set of reals with usual less than equal to, set of rationals with the usual less than equal to. In fact, we can have any subset of real number. Then power set of x, where x is any non-empty set, is a poset with the containment relation. Then we have also seen that set of naturals under divisibility is a poset. Here a is related to b if and only if a divides b. Okay, a divides b. So reflexivity, you can prove that any number divides itself. Okay, any natural number divides itself. Any natural number divides itself. Okay, so this relation is a reflexive relation over naturals. Then what about other properties? You can have other properties also on the same lines. Then let us see the antisymmetric property of this. Okay. So and for antisymmetry, if you pick any two natural numbers such that a is related to b and b is related to a, then a divides b and b divides a, so a will be equal to b. This we have already seen yesterday also. For transitivity, if a, b, c are natural numbers such that a is related to b and b related to c, so this implies a divides b and b divides c. So there exists some n and m, okay, belonging to m, n says that b is equal to na and c is equal to mb. So c will be equal to nmb. So this implies a divides c. So transitivity. Okay. So hence n with division is a poset. Fine. Fine. Is it fine? Yes. Yes, sir. So there are more examples we will see later on. अभी धीरे धीरे और भी examples आएंगे that we will do. So now totally ordered sets. We are going to define totally ordered sets. So what should be the definition? Totally ordered set से क्या लग रहा है कि क्या होना चाहिए definition? Every element is comparable. Yes, every pair of element is comparable. ठीक है? और chains. ठीक है, तो इसे chain भी बोलते हैं, tosets भी बोलते हैं. So we will always use the term chain. ठीक है? But sometimes they are also referred to as totally ordered sets or chains. ठीक है? So a partially ordered set is said to be a totally ordered set if every pair of elements in P are comparable.
ठीक है। A partially ordered set P is said to be a totally ordered set or chain if every pair of element in P are comparable. If every pair of elements in P are comparable, that is, for each AB belonging to P, either A is related to B or B is related to A. Okay, fine. So is this clear? Yes, sir. So कुछ एग्जांपल्स बताओ चेन के। अभी जितने करे हमने उनमें से कोई एग्जांपल बताओ। Set of naturals with usual less than equal to, is it a chain? Yes, sir. So let X be any subset of R, then X with is a chain where this is usual less than equal to, ठीक है। So X with usual less than equal to is a chain. Denotes usual less than equal to. ठीक है। So this is a chain. कोई भी सेट ले लो, सेट ऑफ नेचुरल्स ले लो विद यूजुअल लेस देन इक्वल टू, सेट ऑफ रियल्स ले लो, सेट ऑफ इंटीजर्स ले लो, सेट ऑफ रैशनल्स ले लो, कोई भी लोगे तो दैट विल फॉर्म अ चेन, क्योंकि कोई भी दो नंबर कंपेरेबल है, या तो कोई बड़ा होगा या कोई छोटा होगा या बराबर हो सकते हैं, बट ऐसा कोई भी दो नंबर नहीं होगा कि ना कोई बड़े हैं ना कोई छोटे हैं, ठीक है ना। इज इट फाइन? अच्छा, कभी ये मत यूज करना, डोंट यूज दिस, हमेशा इसी डायरेक्शन में रखना इसको, ग्रेटर देन इक्वल टू मत यूज कर लेना, ठीक है। जैसे अगर तुम हम, क्योंकि ये इस तरह से नोटेशन इस तरह से यूज कर रहे हैं, सो डू नॉट यूज दिस नोटेशन, अभी हमने इसको डिफाइन नहीं करा है ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है। ये यहाँ पे लिख लेते हैं, नोट, वी हैव नॉट डिफाइंड दिस so far, okay, so if A is related to B, then do not write it as B is, it has no meaning, ठीक है। Is it fine? Yes, is it fine? इसको कभी यूज मत करना, इसको हम बाद में डिफाइन करेंगे, तब उसके बाद उस सेंस में यूज कर सकते हो
but you cannot use it right now. ठीक है? Okay, sir. ओके फाइन. एक और ये भी लिख ही देते हैं यहाँ पे so that it will make you more clear. So this less than equal to is just being used as a symbol and it may have nothing to do with usual less than equal to. Okay. Usual less than equal to that we are familiar with. Okay, fine. So ये हो गया notations. Yes. और कोई एग्जांपल बताओ चेन का. Any other some different from numbers जिसमें चेन हो. कंटेनमेंट. कंटेनमेंट तो नहीं होगा. अगर सेट जो है तुम्हारा अगर सेट अगर कार्डिनलिटी उसकी ग्रेटर देन 1 है तो इट विल नॉट फॉर्म अ चेन. क्योंकि जैसे अगर हमारा x अगर a भी है, ठीक है, x अगर a भी है तो पावर सेट क्या हो जाएगा अपना px विल बी. क्या क्या एलिमेंट्स आएंगे इसमें. Phi single फाइव D B कॉमा B ए single कॉमा D. बी कॉमा ए बी. b a b. तो अगर हमारा a इज इक्वल टू a है एंड b इज इक्वल टू b है देन is a and b comparable. नो सर. No. ठीक है. सो अगर कार्डिनलिटी इसकी 1 है तो कंपेरेबल होगा क्योंकि फिर तो कुछ फाई और यही सेट आएगा. बट अदरवाइज इट इज नॉट कंपेरेबल. ठीक है. इज इट क्लियर. चलो लिख लेते हैं इसको यहीं पे एज एन एग्जांपल. अब डिस्कस कर ही लिया है हमने तो. सेकंड if cardinality of x, cardinality, ठीक है, ये नोटेशन कार्डिनलिटी का होता है, is greater than 1 then px with containment relation is not a chain. Okay. So we can write like this. For example, so for example, if x is equal to ab px, then px is this. Then a is not contained in b and b is not contained in a. Thus a is not comparable with b. अच्छा, एक नोटेशन डिफाइन करना भूल गए. सो लेट अस तो बाद में कर लेंगे डिफाइन उससे. और कोई बताओ. और कोई एग्जांपल that is coming to your mind which is a chain.
What about set of naturals with usual less than equal to? Is it a chain? Sorry, set of naturals with division. अभी division कराया ना हमने? Yes. No, sir. No, sir. Third example. N with less than equal to is not a chain where A is related to B if and only if A divides B. Okay. For all AB belonging to N. So ये relation है. So it is not a chain. 4. Let us take X equal to A says that A divides 64. So क्या है? A क्या सेट है? A क्या सेट था हमारा? बताओ. A is a collection of all those numbers that divide 64. क्या होगा A? तो X क्या था हमारा? बताओ. Let X equal to A belonging to N such that A divides 64. What is this set? Show that X is a partially ordered set with respect to less than equal to where A is related to B with respect to divisibility. ठीक है. Is X a chain where A is related to B if and only if A divides B. चलो बताओ. फर्स्ट हमने ऑलरेडी देखा हुआ है कि डिवीजन के साथ कोई भी सेट हो, इट इज अ पार्शियल ऑर्डर, ओ इट इज अ पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, राइट. ठीक है. सो ये प्रूव अपने आप कर सकते हो इस चीज को. दिस यू कैन प्रूव योरसेल्फ. ऑलरेडी डन. We have already seen that X is a poset. ठीक है. It will be a poset. X क्या है हमारे सेट? बताओ. X क्या है? What is X? Factors of 64. Factors of 64. Now is it a chain? Yes, sir. Why? Yes, sir. Why? Sir, every pair of set are divisible. Means there is a relation. हाँ, क्यों हो रहा है ऐसा? जैसे अगर मैं factors of if I take factors of 12, will it be comparable? No, sir. क्यों? Sir, because 3 and 4 are factors of 12, they are not comparable. बट यहाँ पे ऐसा कि factors of 64 में ऐसा क्या हो रहा है? क्योंकि 64 is of the form 2 to the power 64 क्या है? This is 2 to the power
कितना हो गया 8 into 8 2 to the power 6. 2 to the power 6. So this is the factors of 2 की power 6. So इसके factors किस तरह के होंगे? They're all powers of 2 only, right? So that's why they are comparable. ठीक है ना? So note that x is nothing but it is 2 to the power I, where I is running from 1 to 6, right? I is running from 0 to 6, क्योंकि 1 भी आता है ना, ठीक है? So this is 0, 2, 4, 8. So since, so it is easy to see that every pair of elements in X are comparable. Hence, X is a chain. ठीक है? But factors of 12 will not be a chain. ठीक है? So एक chain का हमने एक नॉन ट्रिवियल से एग्जांपल ढूंढ लिया, ठीक है ना? Is it fine? Yes, sir. Okay. So और चेन हो गया. ओके, ये ट्राई कर, ये तुम्हें घर से शुरू करना है. Show that C is a partially ordered set. But is not a chain. Here this denotes usual less than equal to. ठीक है? So you have to show that it is a partially ordered set. ठीक है? बट इट इज नॉट अ चेन. क्यों होगा रिफ्लेक्सिविटी? क्यों होगी? क्योंकि हर एक नंबर अपने बराबर है, हर एक नंबर अपने से इक्वल है. सो उसको कॉल सकते हो लेस देन इक्वल टू, राइट? यू कैन कॉल इट एज लेस देन इक्वल टू, क्योंकि लेस देन इक्वल टू में इक्वल टू इज देयर. ठीक है ना? सो यू कैन कॉल, सो रिफ्लेक्सिविटी हो जाएगी. एंटीसिमेट्रिक के लिए कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर उठाओगे, अगर वो कंपेयर वो है, अगर z1 इज लेस देन इक्वल टू z2 एंड z2 इज लेस देन इक्वल टू z1, तो क्या होगा? दोनों इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि z1 और z2, अगर z1 इज लेस देन इक्वल टू z2 मींस z1 एंड z2 आर कंपेरेबल. कंपेरेबल कौन से कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं? Which complex numbers are comparable? 1 plus I and 2 minus I. What can you say about these two? Are they comparable? We cannot say anything. They are not comparable. ठीक है? Not comparable. Comparable कौन से होते हैं? जिसकी imaginary terms 0 होती है, right? मतलब जो प्योरली रियल होते हैं, मतलब कि रियल नंबर्स, वही कंपेरेबल होते हैं, बाकी कोई भी कंपेरेबल नहीं होता. ठीक है? सो बट प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई कर रहा है, एंटीसिमेट्रिक है, क्योंकि अगर जब तक कंपेरेबल नहीं होंगे तब तक एंटीसिमेट्रिक की बात नहीं आएगी. सो ए लेस देन z1 लेस देन इक्वल टू z2 मींस कि z1 और z2 रियल है, z2 लेस देन इक्वल टू z1 मींस कि दोनों रियल है, तो फिर तो वो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो ही जाती है. सो इसलिए पार्शियली ऑर्डर्ड सेट बन जाता है, डिस्पाइट बीइंग कि देयर आर एलिमेंट्स व्हिच आर नॉट कंपेरेबल, बट स्टिल इट इज अ पार्शियली ऑर्डर्ड सेट, क्योंकि पार्शियल तो रिलेशन है ही ना ऑर्डर. हर एक एलिमेंट्स के बीच में ऑर्डर नहीं है, बट देयर आर सम एलिमेंट्स जिनके बीच में ऑर्डर है, इसलिए पार्शियल ऑर्डर यूज करते हैं हम टर्म. ठीक है?
पार्शियल ऑर्डर इसलिए यूज करते हैं बिकॉज सम एलिमेंट्स आर कंपेरेबल, सम आर नॉट कंपेरेबल. सो कॉम्प्लेक्स में जैसे पार्शियली ऑर्डर ऑर्डर तो है ही ना, क्योंकि रियल नंबर्स है उनमें तो ऑर्डर है ही. जब प्योरली जिसमें इमेजिनरी टर्म्स ऐड हो जाते हैं वहां पे ऑर्डर खत्म हो जाता है. बट स्टिल देयर आर नंबर्स विच डू हैव ऑर्डर, सो इसलिए पार्शियल ऑर्डर सेट है ये. ठीक है ना, इसको प्रूव करके लिख लेना इसको. एंड इट इज नॉट अ चेन, क्योंकि अब जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि 1 + i एंड 2 - i, ये दोनों कंपेरेबल नहीं है, सो इट इज नॉट अ चेन. ठीक है, सो यू कैन राइट इट्स प्रूफ, राइट. Okay, you can do it yourself, so we are not going to do it then. So किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है? If anyone wants to ask any question, anyone wants to ask anything? No, sir. Okay, fine. So then I am ending this meeting. So bye everyone.